Students who are sitting on the front row, please ensure that you are not keeping your lap one above the other. Boys. Okay, we will be starting the session. No leaving of space. फिर से मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि ये श्रीराम कॉलेज का वीडियो चालू होगा तब. આમથી બધા એમ કે છે કે માનતા બહુ રખાય નહીં વધારે Students, please throw the chewing gum that you have in your mouth. Don't do that. Keep your bags down. Keep only the journal and book on your lap. Rest of the things can be kept down. Shubham, come here. Okay, now pay attention. Everybody pay attention. इसका म्यूजिक जरा बंद स्लो करिएगा, वीडियो चलने दो. हाँ. Once again, I'm making it very clear today. Whoever is sitting here in the hall,
very clear that you are not loitering around during session. सीधे बैठना है, इधर उधर मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे कोई भी. So please come ahead. Apart from that, you have to make sure. Apart from that, you have to make sure that your phone is on silent mode and it is in your bag. You're not supposed to remove it again and again. That's one thing which you need to make sure. You have to make sure that you are not removing your phone. Apart from this, nobody is going to move here and there or just create any kind of nuisance. I'll be observing everything. Just be very clear about things. Today, the personality which is coming in front of us is a very big personality. So, anybody to show a bad face of our college to her. Clear? Especially girls are sitting here. गुड़ चलता रहता तुम लोगों का. एक को भी मैंने देखा तो मैं सीधा घर भेजूंगा. Make sure you are sitting straight during the session. सोने मत लगना इधर उधर टेढ़े मेढ़े होकर. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच जगह लो मय्यासक्तमनाः और वो आएंगे तो बताओ वत्सल को बोलो गेट से देख के योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवताञ्चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः केभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ येषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः
श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ततया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। Namaste. Myself, Ganga Sushil Warrior, on behalf of team of Center for Universal Human Values of Career Shop College of Arts and Commerce, welcomes you all to day 7 of Life Enhancing Value Added Certificate course on Srimad Bhagavad Gita. Today we have amongst us multifaceted personality, Dr. Jayanti Ravi ma'am, who will enlighten us on Adhyaya 7. We welcome you, ma'am, and request you to take the seat on the dais. The session will have a break sharp at 7 p.m. For 10 minutes, and the question answer session will start at 7:45.
Before we begin our session, let me take this opportunity to introduce our respected speaker. Dr. Jayanti Ravi ma'am is a scientist, civil servant, performing vocalist, administrator, thinker, and a widely traveled development practitioner. She holds a master's degree in nuclear physics from University of Madras, MPA from Harvard University, and a PhD specializing in technology enhanced education from MS University, Baroda. Having authored books, case studies, newspaper articles, published papers in international journals, she has also guided doctoral students and have been a visiting faculty at Harvard University and many other renowned universities in India. She has authored papers which have been published in international journals. She has authored case studies for IIM Ahmedabad. Her professional career includes serving as DDO in Sabarkantha, Collector of Panchmahal, Director of NAC in the Prime Minister's Office, in addition to Principal Secretary and Commissioner, Rural Development, Gujarat. She has worked as Commissioner, Higher Education, Technical Education in Gujarat, and many more. She has championed the Swachh Bharat mission for rural sanitation in the state leading Gujarat to become one of the first ODF states in India. She has been the Principal Secretary of Health and Family Welfare Department after being Commissioner Health for over 2 years. During her tenure as Principal Secretary, Health Gujarat, handling and responding to COVID has been appreciated and documented by WHO along with IIM Ahmedabad and IIPH Gandhinagar in the Intra-Action Review. A case study has been published by IIM Ahmedabad on Gujarat's response to COVID under her administrative leadership. In the SDG Index, India Index by NITI and United Nations, Gujarat has significantly improved the state's performance and ranked for Goal 3, Good Health and Well-being under her leadership. From 17th rank in 2018-19, Gujarat has consistently moved to the 8th position in 2019-20 and now obtained the first rank across the states of India with a score of 86 as per the SDG India Index report released in June 2021. Jayanti ma'am's multidisciplinary, innovative, and creative approach to problem solving has provided results and transformative outcomes that has successfully worked across various sectors. We welcome you, ma'am. I request the following students to offer bouquet to our accomplished speaker, Dr. Jayanti Raviji. Bridge Lakhani, SY-BAF C Division, Gunjan Thakur, FYBCom D Division, Durai Suraya, FYBCom E Division, and Dhruvi Doshi, FYBAF A Division. Thank you, students. I now request our esteemed speaker, to please enlighten us. Namaste. Am I audible? સંભળાય છે બધાને? ગુજરાતી આવડે છે કેટલા લોકોને? હિન્દી કેટલા લોકોને આવડે છે? So what would you prefer? Your job, however well you think. Hindi would be better? Okay. Hindi and English, okay. Is this better? Can I request, मैं अनुरोध करूं आप सब से सीधा बैठ जाएं हम लोग आंखों बंद करके। सबसे पहले
अब हम भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव का उत्सव मना रहे हैं, है ना? कितने साल हुए हमें आजादी मिलने के बाद? 75 completed, we have stepped into the 76th, right? Wonderful. और ये भारत का एक बहुत ही महान पुत्र, जिनको एक आधुनिक ऋषि का नाम भी दिया जाता है, जिन्होंने जो वैदिक ज्ञान था उसे फिर से बहुत एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, in a very modern way, he brought back the secret of the Vedas and placed it before us. और जिस तरह से हम आज 75th अमृत महोत्सव भारत की आजादी का मना रहे हैं, इसी तरह से जब भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तब इस विभूति जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उनका 75th बर्थडे था। ये कौन थे? Any guesses? You can ask me some questions about him if you want any clarification. इनको बचपन से इनके पिताजी के मन में भारतीयता के प्रति एक तरह की घृणा थी, और वो नहीं चाहते थे कि इनके बच्चे पर भारत का लवलेश भी कोई असर पड़े। तो इनको पूरा, इनकी पढ़ाई जो है विदेश में, इंग्लैंड में इन्होंने कराई थी। यानी किसी को पता चला किसकी बात कर रही है? लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो ऐसी अल्प तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी जिस वेंजेंस के साथ शायद उनके पिता को लगा कि इनको भारतीयता का बिल्कुल इनके ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए, लेकिन भारतीयता उनके ऊपर एकदम एक वेंजेंस के साथ, हम कह सकते हैं कि पूर्णतः उनको उसने भावी भी किया, प्रेरणा भी दी, और उन्होंने भारत में अद्भुत काम किया स्वतंत्रता संग्राम में भी, एक रेवोल्यूशनरी के तौर पर। और उसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ी एक घटना हुई। उसके बाद वो पूरा उन्होंने अंतर्मुखी जीवन, जो आपके इस बारी का जो थीम है, इन्वॉल्व एंड इवॉल्व, राइट, वो बाहर की दुनिया में बिल्कुल पहले काम करते थे। बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी में भी आके उन्होंने वहाँ सबको पढ़ाई सिखाई भी थी, वहाँ उन्होंने काम किया, योगदान किया। उसके बाद आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम जैसे अनेक उन्होंने ये जिसे हम कहते हैं सैल्यूटेशंस, ये सब भी उन्होंने रेडी किया, काफी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उसके बाद उनकी अंदर की आवाज उन्हें सुनाई दी, जिसने कहा कि ये सब कुछ छोड़ के आप अंतर यात्रा, इन्वॉल्व एंड इवॉल्व, यानी के क्रांति की तरफ, बाह्य क्रांति होगी पर आंतरिक क्रांति, उसे हम उत्क्रांति भी कहते हैं, एवोल्यूशन, उस दिशा में उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया और बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ के भी गए हैं। अब उनकी 150th 150वीं जन्म जयंती का भी हम उत्सव मना रहे हैं। अब क्लियर है कौन है ये? Anyone wants to raise their hand and make a guess? Okay, इन्होंने, इनकी जो तपस्या भूमि थी वो पौंडीचेरी थी। हाँ, does it light a lamp? पौंडीचेरी के साथ कौन से भारत के एक महान विभूति का कनेक्शन है? महर्षि अरविंद, श्री अरबिंदो। Have you heard this name? पौंडीचेरी के बारे में सुना है कितने लोगों ने? ओके, सो अभी मैं पौंडीचेरी और श्री अरविंद के साथ बहुत ही एक
गहन संबंध जिसका है, ऐसी एक संस्था जिसको भारत के सरकार ने एक पार्लियामेंट के एक्ट के तहत, एक कायदा के तहत उसको एक दर्जा दिया है, ऑरोविल फाउंडेशन। उसमें मैं अभी फर्ज बजा रही हूँ, अभी मेरा कर्तव्य वहां निभा रही हूँ। आई एम ऑन अ डेप्यूटेशन टू द ऑरोविल फाउंडेशन and I would like to welcome all of you. Have you heard of Auroville? How many of you have heard of Auroville? You can raise your hands clearly so I can see. Okay. Now, Auroville में जो Oro है, that Oro is attributed to whom? Sri Aurobindo. It also means the city of dawn. So I would like to start with a small Gayatri, which is attributed to Sri Aurobindo. उसे श्री अरविंद या श्री अरविंदो गायत्री कहते हैं। उसका जो मतलब है ये है कि जो सुप्रीम ट्रुथ है, सर्वोत्तम जो सत्य है, वो हमारे अंदर जितने भी डायमेंशंस हैं हमारे अस्तित्व के, ऑल द डायमेंशंस ऑफ आवर बीइंग, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसे इल्यूमिन करे, उससे तेजस प्राप्त हो, ये इसका हार्द है। So I would request all of you to sit straight and close your eyes as I recite the Sri Aurobindo Gayatri, and those of you who feel like, if you know it, you're welcome to join. Om. तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। सबसे पहले शुरुआत में बीके श्रॉफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, एनएमएच श्रॉफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जितने भी ट्रस्टीज, महेश भाई, यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स, खास करके स्टूडेंट्स एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राचार्य, आचार्य, सबको मैं तहे दिल से अभिवादन करना चाहती हूँ, अभिनंदन भी देना चाहती हूँ कि ये विचार के एक वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स ऑन भगवत गीता का जो एक विचार है, न सिर्फ इसको एक विचार के आयाम, प्लेन ऑफ आइडिएशन में था, पर इसे एक्शन, कार्यान्वित करने में भी वे सफल रहे हैं। ये शायद मेरे ख्याल से दूसरा साल है महेश भाई कि जो उत्तरोत्तर इसका अमल यहाँ हो रहा है। मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता हो रही है कि इतने सारे विद्यार्थी यहाँ सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक छोटा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ और फिर वी विल गेट टू चैप्टर 7। थोड़े साल पहले मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करती हूँ, IAS ऑफिसर हूँ, और उसमें हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग ऑफिसेस में काम करने का एक अवसर मिलता है। मेरे ख्याल से 10
12 साल पहले की ये बात है। एक ऐसे ऑफिस में मेरी नियुक्ति हुई, मेरा पोस्टिंग हुआ था, जिसको हम स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू अपील्स कहते हैं। यानी एक ऐसी ऑफिस थी कि जहां लोग जमीन, मिल्कत, प्रॉपर्टीज के विवाद हों तो उसे लेके मेरे सामने आते थे, और एक रेवेन्यू के जज, एक न्यायाधीश के तौर पर मुझे अपनी फर्ज अदा करनी थी। मुझे अभी भी याद है एक घटना। एक परिवार शायद भावनगर के या कहीं के थे, और इस परिवार ने एक जमीन और एक प्रॉपर्टी का मामला था, जो उस दिनों में शायद थोड़े चंद लाखों या करोड़ जितनी संपत्ति का मूल्य था। The value of the property ran into several lakhs, perhaps a crore of rupees. और उसके बारे में बहुत सालों से ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक व्यक्ति थे, उनकी लड़ाई उनके बेटे के साथ भी थी, फिर बेटा गुजर गया था, फिर उनकी पुत्र वधू जिसे कहते हैं, डॉटर इन लॉ, उनके साथ, और उनका एक बेटा भी था जो अभी 16-17 साल लगभग आपकी उम्र जितने जितनी आयु थी उस लड़के की। इन सब की पूरी जीवन जिंदगी तब इस एक समस्या में बहुत ही उलझी हुई थी। और जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे दोनों तरफ से, एकदम जिसे कहते हैं बिटर, कड़वे आर्ग्यूमेंट्स दोनों करे जा रहे थे, एक दूसरे पर दोषारोपण, फेंकना और लड़ाई, ये सब हो रहा था। उस दिन मुझे लगा कि इसे हम कहते हैं वडिलोपार्जित मिल्कत। वडिलोपार्जित मिल्कत क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जो इस व्यक्ति ने सेल्फ अर्नड प्रॉपर्टी, उसके कमाई से किया हो, ऐसा ना भी हो, पर उसे जिसे हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, ऊपर से उसके बाप दादा के समय से मिला हो, उसको फिर वो अपने भी बच्चों को देते हैं, ऐसे। तो इस मिल्कत जो शायद थोड़े लाखों रुपए की उसकी वैल्यू थी, मूल्य था, इतनी एक बहुत ही जटिल लड़ाई, और इतने साल उनके जीवन के व्यर्थ भी गए थे। और आई एम श्योर ऐसा जीवन, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी अनहैप्पी लाइफ फॉर ऑल ऑफ देम, इजंट इट? इट डॉन्ड ऑन मी कि हमारे यहाँ ये सब जो स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण, भगवत गीता, मेरे अनुभव से आई कैन वाउच फॉर इट, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ दैट these are worth much, much, much more than a few crore rupees, dollars, $1,000,000 and so on. मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसका जो मूल्य अमूल्य है, और इसके लिए मैंने कभी नहीं देखा कि लोग आके लड़ते हों, क्योंकि ये तो हम सबका अधिकार, ये भी हमारी वडिलोपार्जित संपत्ति है, जिसे हम सबको मिलना चाहिए था। पर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इसके लिए लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं कि ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके लिए लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। तो तब से मेरे मन में भी था कि जहां भी हो सके, और आप सबको भी आज मैं अनुरोध करूंगी कि खास करके भगवत गीता, आई वुड से, बिल्कुल आज के जमाने में, इट वॉज रिटन perhaps 5,000 years ago. There is a belief that it was written about 5,000 years ago. We may dispute that a little bit. But आज भी सांप्रत समय, it is very contemporary, not only in India, not only anywhere in Asia, across the world, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी स्थल, स्थिति, संजोग में आप देखेंगे तो इसकी रेलेवेंस है। आज भी इट इज वेरी वेरी कंटेम्प्ररी, फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि ये इट डील्स विथ ऑल द इश्यूज, सर्कमस्टेंसेस, जो समस्याएं, परिस्थिति जो एक ह्यूमन बीइंग
ह्यूमन बीइंग्स जहां भी होते हैं उसमें दुविधाएं जो आती हैं, द आर्ट एंड साइंस of living. How do I live? How do I deal with problems, the human issues of life? तो उसका इसमें बहुत अच्छा solution है. और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लीडर्स हैं, नेतृत्व करते हैं अलग अलग फील्ड में. जैसे यहाँ पर भी आपको जो बहुत ही एक अच्छी लाइनअप ऑफ एमिनेंट आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स जो किया गया है, जो अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल दे आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और इन सब के जीवन में इन्होंने देखा है, पाया है, अनुभव किया है कि जब भी कोई भी समस्या होती है तो दिस बुक, ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, उसके अंदर आप कोई भी पाना खोल के देखेंगे तो आपको जरूर इसमें संकेत, सॉल्यूशंस, चाबी, keys to problems बिल्कुल मिल सकते हैं. And you must have experienced it in some way, each one of you. कितने लोगों को ऐसा कोई experience हुआ है? Any of you has gone through any such experiences yet? Some of you? Good. And I'm sure जितनी इसमें आपकी रुचि होगी, दिलचस्पी रहेगी, श्रद्धा. There's something called श्रद्धा. We'll talk about श्रद्धा, right? A little later. पर अभी जैसे मुझे कहा गया है, we will go through the shlokas of this chapter. Fortunately, this is not a very long chapter. A few years back, मुझे second chapter के बारे में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी मुझे उसका एक, पिछले साल भी मेरे ख्याल से दूसरे चैप्टर का मुझे यहाँ 9वें अध्याय का भी मुझे एक अवसर मिला है. तो इसमें हम एक एक श्लोक को अभी पढ़ेंगे और उसकी जो निहित अर्थ है उसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो शैल वी स्टार्ट. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः, 7th चैप्टर. इस चैप्टर की एक विशिष्टता है कि इसमें पूरा श्री भगवान के मुखारविंद से ही इस पूरे चैप्टर में you only hear the voice of the Lord of love, Shri Krishna. इसमें अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, उनके कोई वर्ड्स नहीं हैं. It is just pure nectar, pure honey from the mouth of the divine Lord seated within each one of us. हम सबके अंदर जो विराजमान है. टिबेटन लोग एक बहुत अच्छा एक चांट करते हैं, आपने शायद सुना होगा, ओम मणि पद्मे हम. Have you heard this? How does it go? ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम. What does it mean? आप सबके हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, in the lotus of your heart there is a jewel, एक मणि है. And what is that lotus? और उसके अंदर जो jewel है, मणि है, क्या है वो? It is nothing but a spark of the divine consciousness. है ना? हम सबके अंदर there is that divine consciousness. और अगर वो consciousness नहीं है, if we have a body without consciousness, it may be as beautiful as you. It may have eyes, hands, nose, but then we refer to it as it. What is it? It's a body. But when there is consciousness, you are alive and able to do a bunch of things, able to think, able to act, able to feel, able to sense, ideate, smell, and so many things. So the root of all that is
that divine spark within you, जो आपको चेतना से भर देता है, वो जो दिव्यता हम सब के अंदर बसा है, उस दिव्यता का नाम हम श्री कृष्ण भी कह सकते हैं। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राम राम बोलो, हरि राम बोलो. There's a beautiful song. Allah, Malik, Isha, Nanak, Zoroaster, Mahavir, Budhanam बोलो. जो नाम चाहो वो नाम बोलो, पर प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, गोविंद बोलो. So that is that little spark which is seated in each one of us. You may call it by any name. We're all into digital money today. Yes? We all use Google Pay, but do you still sometimes look at a currency note? Do any of you have a currency note in your purse? How many of you are carrying some money? Now I see more hands. Is there any note that any of you has? Maybe 100 rupee note? Now, the length and breadth of that piece of paper on which the 100 rupee note is designed, शायद इतना होगा, इससे बड़ा होगा. और आप में से जितने लोग साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, आपने देखा होगा कि अगर उस पेपर को जलाया जाए तो उसमें से जो कैलोरीफिक वैल्यू, जो हीट निकलती है, you understood what I'm saying? If you were to use that piece of paper to burn it and generate heat, maybe आपके पॉकेट में जो 100 रुपी या 1000 रुपी का नोट भी है, 2000 रुपीस का नोट and that piece of paper, दोनों में कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही होगा. लेकिन ये जो प्लेन पीस ऑफ पेपर है, इसकी कोई वैल्यू है? क्यों? Why? And why does your piece of paper have value? Because RBI, there is some stamp on it. It's a currency which has an endorsement of RBI. Similarly, any action, anything that we do, when it has that stamp and endorsement of bhava, of a genuine feeling of devotion, it completely changes the value of that act. Can we understand this? Does it make sense? Yes? So, in that spirit, we turn to this chapter, and इसमें सबसे पहले we go to the first chapter. Shri Bhagavan Uvacha Maya Saktamana Partha Yogam Yunjanmadashrayah Asamshayam Samagram Mam Yatha Jnasyasi Tatshruno. Mayi Asaktamana Partha. किसको कह रहे हैं भगवान? अर्जुन पार्थ से कह रहे हैं कि मुझे आसक्त मना, मतलब बिल्कुल अनासक्त नहीं. अनासक्ति इज द ऑपोजिट. आसक्त एकदम प्रेम से मुझे पकड़ लो, अपने चित्त को मुझ में बिल्कुल जकड़ लो, पकड़ लो. होल्ड ऑन टू मी टाइट विथ योर माइंड. योगम युंजन मदाश्रयः. आपकी जो भी ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, उसे करिए विथ yoga. Yoga means with a sense of being connected, united. With whom? Connected and united with whom? With the divine. You may give it any name, but with your own self. Or isko, for some of us who find it difficult to think of Sri Krishna as a separate entity or a God, हम हर एक व्यक्ति के अंदर, there are different levels of consciousness, isn't it? There is a level which is a very, very ordinary level of consciousness, और sometimes आप ही को महसूस होता है कि आप एक
raised level of consciousness से आप महसूस करते हैं कि हम सब अलग नहीं हैं. Have you experienced that? कभी लगता है कि एक दूसरे के साथ वाद विवाद, झगड़ा, इसने ये कह दिया, मैं भी इसको 4 गालियां सुना दूं, ऐसा भी मन में विचार आता होगा. पर ऐसे भी मोमेंट्स हम सबके लाइफ में हैं, ऐसे क्षण हैं जब हमें लगता है कि नहीं, हम सब एक ही हैं. After all, we're all one. Where is the need to think of him and her and you and me as different? We are all one. And that state of consciousness, which is well within the reach of each one of us, we can reach it every moment. हम सब के बिल्कुल grasp के अंदर है. It is within our grasp, हमारी पहुंच के अंदर है. तो उस स्टेटस से, उस सिचुएशन से भगवान कह रहे हैं कि मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम, without any doubt, समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु. Without any doubt, मुझे किस तरह से आप जान सकते हो. ज्ञास्यसि तत् शृणु. Listen to that. So this chapter is a demystifying chapter. इसमें in a very very clear open way भगवान explain कर रहे हैं what is the science and art of life. He's opening it up for us. जैसे कोई, अभी हम यहाँ आ रहे थे महेश जी और मैं, तो आपका जो playground है, we noticed the door had a lock. It was locked. If we had a master key and we could open it, doors would open, isn't it? So similarly for situations in life, जीवन की जो जटिल समस्याएं हैं, परिस्थिति है, उसके लिए if you had a master key, wouldn't it be wonderful? हर चीज, हर समस्या को आप मास्टर की से सॉर्ट आउट करते हुए जाएंगे. समस्याएं तो आनी ही हैं. We can't wish away difficult challenges, situations, वो तो रहेंगे. But if you had the way to deal with it, life would be a bed of roses if you dealt with it that way. मीरा जी कहती हैं एक बहुत सुंदर भजन में, we will talk about that also later. भवसागर अब सूख गया है, फिकर नहीं तरनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की. She sings it beautifully and she says that now these things don't bother me. I can walk on it जैसे snow के ऊपर. Have you seen anybody do ice skating on a river which is frozen? Because then there's no fear of falling into it, of drowning in it, because you've learned and this whole thing has got frozen. It doesn't bother you. You live in it. You're doing your work. You're successful. And yet you're not scared of getting drowned. Is this clear? So that is the secret that he's going to tell us. उसके बाद भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशिष्यते. अहम, I, for you, te, this savijnanam, with the science I am going to teach you, this knowledge with the complete theory and practice of it. Jnanam vijnanam sampurnapane aseshatah. I am going to tell you, yat jnatva iha bhuyah anyat jnatavyam na avasishyate. Knowing which there is nothing else left in this world which is now remaining, to be understood, to be known. And he guarantees it. So this is a master key. So उसके बाद कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः. In this whole flood sea of humanity, there are thousands of people who do make an attempt, but many of them fall back. They don't succeed.
There are a few that finally succeed, but there are very few who reach the top. There's a very interesting story I want to tell you. यूरोप का एक बहुत ही बड़ा शहर है जहां पर एक बहुत बड़ा टावर है. कौन सा शहर है ये? पेरिस. पेरिस के अंदर कौन सा टावर है? आईफिल टावर. अब एक बार देयर वाज अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस ऑफ अ बंच ऑफ फ्रॉग्स. बहुत सारे मेंढक वो आईफिल टावर के बेस पर इकट्ठे हो गए थे. हैव यू heard the story? हाँ. So there was a big conference of a large number of frogs. वो सब आईफिल टावर के बेस पर इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने एक चैलेंज घोषित किया कि कयो देड़को आमाथी छेक ऊपर સુધી પહોંચી શકશે. What was the competition? Which frog is going to actually climb up and reach the top of Eiffel Tower first? Right? तो फिर सभी मेंढक जो है उन्होंने शुरू किया अपना प्रयाण ऊपर जाने के लिए. एक दो स्लिप होके फिसल कर कहां पड़ गए? नीचे जमीन पर आ गए. और फिर जो जमीन पर थे उनका काम क्या था? नीचे से क्या कह रहे थे बाकी लोगों को? हाँ, થોડે તો ટાંટિયા પણ ખેંચવાનું કરતા હતા થોડાક. હા, બીજા બધા શું કરતા હતા? હા, they were telling them કે તમે બધા are you all crazy? કંઈક મગજ ફરી ગયું છે? How can you climb up? આ કંઈક હોતું હશે આવું? Forget it. So નીચેથી there were these voices and most of them were doing what? ધ્યાન અહીંયા હતું એટલે they believed. That's the power of words, the power of thought. So they let go and what happened? They also fell down. So the ground swell. બધા frogs ફરી નીચે બધા ભેગા થવા માંડ્યા. Now there were a few frogs which continued. થોડા દેડકા એવા પણ હતા કે જે ઉપર ચાલુ હતા, ચડવાનું એમનું ચાલુ હતું. પછી નીચેથી એકદમ જોર જોરથી બૂમ પાડવા માંડે કે તમે બધા કઈ તદ્દન તમારું મગજ ફરી ગયું છે, ગાંડા થઈ ગયા છો, ઉપર જવાતું હશે. એટલે દેન બાકી બધા પણ જે છે આમ લપસીને કે પછી મૂકી દીધું અને બધા નીચે એકદમ ભેગા થઈ ગયા. Now there was one frog. Was it a frog, he frog or a she frog? So how many say it was a he frog? Mr. Frog hata ke Miss Frog hata? Miss Frog, right? So for all of you it was Miss Frog and for you maybe we'll allow it to be a he frog. Huh? So there was one frog who made it to the top. And when that summit was covered by the frog, નીચે બધા હવે કોણ ભેગા થઈ ગયા? બધા માઇક્સ લઈને. The paparazzi was there. કોણ આવી ગયા? બધા મીડિયા વાળા બધા, all the channels, all the people, એ બધા પોતાનું માઇક અને cameras લઈને આવી ગયા પૂછવા કે ભાઈ તે આ કઈ રીતે કર્યું? To that particular frog કે જેણે ઉપર આઈફિલ ટાવરના છેક ટોપ સુધી જે પહોંચી ગયું હતું. So they all asked this દેડકા બહેન or દેડકા ભાઈ કે what was the secret of your success? તો આપણા આ દેડકા ભાઈ કે બહેને શું કહ્યું? What was the issue? Come on, I think, are you all asleep? Are you like the frog who had lost this? I need some more energy. He couldn't hear. So what happened? Why was the frog able to go to the top? Because he was deaf to all kinds of loose talk, all kinds of nonsense that was coming from down. Yes? Right? તો એનું એકાગ્રતા ક્યાં હતું? એને એક જ વસ્તુ, અર્જુનની જેમ શું દેખાતું હતું? ટોપ. બાકી કશું એને. And he was not listening to people at the bottom because people down were totally waylays, na?
They were saying, "अरे फालतू में क्यों ऊपर जा रहा है, आ जाओ नीचे." All those things. So he didn't fall in that trap. And therefore, it's very important here. Shri Krishna explains the same thing and says that there are thousands of people. He says, Manushyanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye. While there are thousands of people who attempt to go on this path of understanding life, what is this puzzle? What is this thing called life? What are these problems of life? How do I deal with it? किस चिड़िया का नाम है ये जो जीवन है? ये हम सबको हैरान तो करता है ना, sometime or the other. You wonder, how do I deal with it? What is this? We get angry, we get distraught, we get saddened, we get hurt. Have we experienced any of these emotions? Of course, several times in a day, maybe in an hour, isn't it? That is what is human life. All this churning, all this that keeps constantly happening. So he says there are thousands of people who've tried it, but there are very few who practice this of continuing, and there are very, very few who actually get this knowledge. But who અહીંયા છું આજે और मैं आपको ये सब देने जा रहा हूँ, ये सब जो ज्ञान विज्ञान है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कौन कहते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को। और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये भी बहुत महत्व रखता है। अक्सर अगर आपको एक थियोरेटिकल क्लास कोई चीज बताया जाए कि ऐसे करो ये करो, शायद हम लोग भी उन मेंढक की तरह अपना कान बंद ही रखते हैं। लेकिन suppose if the siren goes off in this room, suddenly this room is on fire, there's an alarm, there's a crisis, you have to run out of here. Where will you all run? Where is the exit door? Quickly. Is there an exit? Is there a fire safety door? If there is a crisis, where will you run? What will you do? Your adrenaline, आपके अंदर जो हार्मोन है वो आने लग जाता है, आपका जो हृदय का जो धबकार है, it starts going fast. If there's a crisis, हम सब हमारी सभी पूरी concentration उस crisis पे, क्योंकि हमारी basic एक instinct है कि हमें survive करना है, isn't it? You want to survive. You want to make sure that you're not dead, you don't lose, and therefore you try to figure out and understand. So ये जो कुरुक्षेत्र था, this was a battlefield. It was a moment of crisis for Arjun, and at that point he was totally receptive. If Sri Krishna as his sakha, as his friend, as they were going on a hunting spree or going and enjoying somewhere in some garden, picnicking somewhere, agar ye sab batate, to maybe he wouldn't have been receptive to it. But at this point, he was in a situation where he had to get out of it. He was in a terribly difficult situation in his life, and therefore he was open to it. And now Krishna bhi unko sabhi shortcuts de rahe hain, pura samjha rahe hain. Now there's something beautiful he tells. Jo, as young people, I want to congratulate each one of you, kyunki you're all young people, and a lot of times मैं education क्षेत्र में काफी सालों तक मैंने काम किया था as the commissioner of education, higher education, technical education, and a lot of people would come and complain to me, you know, these young kids are totally off, they don't know, and all kinds of complaints. But I've always felt that all of you youngsters, I found that you were very, very frank, authentic, honest about things, sincere, and if something touched you and you really felt कि ये करना है, तो you would make it happen. The kind of energy you brought, the kind of ideas, creativity that you brought to the table and got things done, it was phenomenal. Am I right? Do you agree or no? Why are you all so tired? You had a long day? Yes. So would you like to stand up and shake your hands and legs for a few moments to relax a little bit? Chaliye, khade ho jaiye. I want to see you. Huh? Doesn't matter. It's a small short break. I want a more lively class here. Just 30 seconds of
moving your hands, stretch yourself, do what you like in your place. But after that, I want you to participate in the interaction. Okay, you can all take your hands out, stand up. Now, with one finger, can you clap? No, that's not what I said. Just with one finger. 3 fingers. 2 fingers. 4, 4. No fingers. 5 fingers. Lift your hands, pat your back. Massage your back. Nicely pat your back. Pít thabdo potani. Okay. Have બેસીએ? You want to stretch yourself pura? Try and touch the sky. आसमान छू लो. बैठ जाइए. Now let's sit silent for 5 seconds. Absolutely no noise with your eyes closed. Still. Eyes closed. Okay. Now we come back to Gita and we are back with a little more energy. क्योंकि अभी ये बिल्कुल मुद्दे की बात पर आ रहे हैं. ठीक है? वो आपको पूरा जो है चाबी दे रहे हैं कि what is this whole life? आपने किसी ऐसी पेंटिंग देखी है आप लोगों ने जिससे आपको लगा है कि वाह, this is so beautiful? या ऐसी एक पेंटिंग जिसे देख के लगे कि this wow, this looks so frightening. I really believed. ये बिल्कुल डरावना है. Have you had that experience? Right? Now what is it? Sometimes you get scared. आपको लगता है कि बिल्कुल I'm scared of this painting. You enter a room and there is. उसके बाद आप ही के मन से आप क्या समझते हैं कि okay, it's just the imagination of an artist, isn't it? He has played with what? Colors, brush, textures, maybe. How many of you like to paint? Now I see some hands, right? So he or she, the painter has tried to create something, a work of art. And so even if it has that impact of frightening me or making me feel, wow, but I realize, okay, what has he used? Colors in a certain way to create a certain mood. Do we go and watch a movie? हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, है ना? कौन सी पिक्चर अब बिल्कुल लेटेस्ट फिल्म कौन सी देखी है आप सबने? Okay. Now, इसमें भी were there scenes where you felt like crying? Yes? Or scenes where you felt, it was really funny or really boring? ये सब emotions तो आए होंगे ना? जब आप उसके साथ identify हो जाते हो. But for a minute, if you sit back and look at it, what do you realize? What's happening? It's just a bunch of people who are acting. They're just doing some roles and they're doing it so beautifully that you believe it's true. So you know uske components kya hai. Okay, there are some people doing some theatrics, drama. So similarly, ye pure life ka jo paint, brush, all these details. अब इस चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान आपको पूरा इसका composition, what is life? He talks about what is it that makes up all of this. इस hall में हम सब बैठे हैं. What is the composition of this hall? You tell me. People, but ultimately for every human being, what are we made of? 5 elements. Which are these 5 elements? Earth, water, fire, air, space, sky,
Okay, usko Akash. Bhumi, Jal, Agni, Vayu, Gagan. These are the 5 elements. And along with it, what is it that is driving you crazy? Wahi cheez hogi. Somebody touched you here. You felt, wow. And some hand touched you here and you were ready to go and bite that person, claw the person. What is it that works inside us? Mind? Intellect? What about our ego? Do we have an ego? Yes. Ego is also needed to survive. So these are the 8 things. Now you'll have to repeat. What are the 8 things that make up everything in this world? From everything you can possibly see. What are the 8 things? The 5 elements and ego, mind and intellect. तो इसको इस श्लोक में कहते हैं भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा. He says these 8 things, ये जो 8 हैं, यानी भूमि आपः अनलः वायु खम मन बुद्धि च मतलब and अहंकार, ये 8 चीजें, these are the 8 components. You can mix it. जैसे how many of you are fond of cooking? I want to see more hands on this side, right? I think if you're a metro male, you have to be good at cooking, right? And baking too. So जब cooking करते हैं तब सब मसाला सब उसमें mix कर देते हैं ना, and then you make out something, gravy बन जाता है, right? A lot of us like to cook, it's a hobby. Similarly, ये कहते हैं कि ये 8 जो चीजें हैं इसको अलग अलग, there might be a person, there might be a boy, a man here who has maybe who's 6 feet tall, who's got eyes that are brown in color, who's got all of this, these descriptions that we have of ourselves. हम कहते हैं ना, I am, what do we identify with? हम सोचते हैं कि मैं कौन हूं? What do we think I am? When we ask who are you, क्या कहते हैं हम? What is the reply that comes to your mind? आप कौन हो? We tell people, I'm a boy, I'm a girl, I'm this tall, मैं ये पढ़ता हूँ, ये करता हूँ. We give all descriptions about us. I have long hair, short hair, I wear glasses, I have a voice which is like this, etc., etc. So all these descriptions, usually, what is it about? The body, isn't it? We can say that I'm very tall, I'm a little stout, I'm slim, I'm a little healthy, and so on and so forth, right? So all this is describing the body. Then we also go on to talk about our qualities. Am I patient? Am I caring? Or do I get irritated? And we are honest about it. I get irritated. Mujhe to gussa aa jata hai. Some of us tell that. And it's good to be truthful also. Because if we are truthful, then we can deal with it better. We have to be honest to ourselves. So isme, you'll be very surprised. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, which for me was a revelation. It was a breaking news when I read this several years ago. You know what he said? उन्होंने कहा कि मन, बुद्धि, अहंकार. You would like to think ये सब soft. Have you heard of hard and soft things? Hard power and soft power, right? Hard infrastructure क्या होता है? Brick, mortar, gravel, ईंट, रेती, कपची, सबको क्या कहते हैं हम? Infrastructure, hard. But there is also a soft infrastructure. What is that? Health, education. You know, when you talk of a society, because many of you are from commerce, how many of you are from commerce? All of you. So when you look at any society, any country, nation, you look at these words. Have you heard of these words? Soft infrastructure and hard infrastructure. Social capital, soft capital, hard capital, in this context too. So now I was quite
सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, लास्ट रो में जो बैठे हैं आपको भी मैं पूछने वाली हूँ. The gentleman in the last row, can I request you to answer this question? So the point is, he said all of these 8. Which are the 8 things we spoke about? 5 elements. क्या है 5 elements? भूमि, जल, अग्नि, आकाश. बराबर. And what are the 3 things? Very good. Ego, mind and intellect. But he says ये सभी जो है, I used to think ये 5 ठीक है, these are hard physical things, right? Water. If I pour this water, I can touch it. It's physical, right? Agni, fire, yeah, it is energy, but if you touch it, you can, it has a swaroop. Space, yes. But he goes on to say that even mind, intellect and ego, in सबको उन्होंने क्या कह दिया है? It is a part of jad prakriti. Isn't that something very, very counterintuitive? मतलब आपने माना होगा कि ये मन बुद्धि तो सॉफ्ट इंटेलेक्ट है, ये चेतना के साथ है. But he says no. All this baggage of 8 things, all of this is a part of prakriti. Which prakriti? Apara. He again distinguishes apara, but there is another purusha or the para. That is the consciousness, which is the energy, the consciousness that makes us do various things. Abhi humne dekha. What's the difference between a body? It may have the same attributes as us, but where the breath has stopped. And between us, we are able to think, we are able to get up, we are able to express ourselves, participate, think, analyze, and so on. So he says, apareya mitastvanyam prakritim vidhi me param jiva bhutam mahabaho yayedam dharyate jagat. So he says, all of these 8 which you have understood, ये सब क्या है? ये मेरी प्रकृति है. लेकिन but ये सब क्या है? अपरा, यानी मेरी जड़ प्रकृति है. This is all the hard part of my nature, which is in a way lifeless. Jad yani something which is very, very roughly translated, crudely translated as lifeless. It is not lifeless, but there is the other element in each one of us, in the whole of the universe and everything, which is itah anyam yaya idam jagat dharyate me jiva bhutam param prakritim vidhi. Hey Parth, please know, जानो. क्या जानो पार्थ? कि इन सब चीजों को धारण कौन करता है? That consciousness. उसे क्या कहते हैं? पराम प्रकृतिम. बराबर? में जीव भूताम परा प्रकृतिम. And then उसके बाद भगवान goes on to describe various things. एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. He starts describing the qualities of the divine consciousness, the divine which is behind everything. And he says, I am responsible for the birth, prabhava. What is prabhava? Birth. And pralaya, dissolution of everything. Har cheez ke liye, he says, all these lives, all of this, everything that you see in the world, ये सब कुछ जन्म लेता है मेरे इस प्रकृति से ही. दोनों प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, इनसे. और पूरे जगत का भी जो प्रलय प्रभाव, प्रलय प्रभव, ये जो साइकिल है, ये सब के लिए भी मेन
reason, the raison d'être, ऐसे कहते हैं ना. What is the main reason? कारण, मूलभूत कारण कौन है? कौन है? कौन है? Whatever name you give, but it's that divine spark located within you. Have you felt? Have any of you felt it? You can do one simple exercise. Have you noticed कि आपके अंदर हमेशा, मैं जैसे अब बोल रही हूँ, there is something going on in your mind which is a 24-hour FM radio channel or a Netflix movie channel. Do you notice that inside your brain, inside your mind? Constantly chattering. Ah, look at the bluff that she's saying, or look at that. It's very hot here, isn't it? Maybe I should run out. कुछ कुछ ऐसे बातें चल रही होंगी ना? Do you notice that constant monkey in our heads which keeps chattering? Buck, 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 buck. You hear that all the time? For a minute, can you stop and go back and watch that happening? Can you watch? Can you just freeze it? And can you see कि ये हो रहा है, देखने वाला अलग है? Are you able to observe that chatter? Can you observe कितने लोगों को ये observe हो रहा है कि there is a constant commentary going on? It's natural. It happens with everybody. You know, you are thinking, you are talking within you. But the minute you start seeing it, the minute I start seeing this, I'm different from it, isn't it? If I'm a part of this, I don't see it as being different. मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं खुद, if I'm doing something, but the minute I stand back and I observe something, that means I'm different from what is being observed. I become the seer, the observer of something which is happening. वो observer कौन है? That is Shri Krishna. That observer within you. Each one of you, I guarantee, can see it. You can feel it. You will know it. All you have to do is have that willingness to see. If you just suspend all your thoughts for a minute and just watch what is happening, the watcher, जो देख रहा है, that is that divine spark in you. You can feel things. You can feel there is sometimes goosebumps on your hand. You feel different things. Who is that who is feeling it? वो कौन है? That is nothing but that spark of the divine. And if you can be more and more in that space, ध्यान से समझ लीजिए, ये बिल्कुल invaluable, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए वाली बात है. And in life, this is extremely useful. I'll tell you. बहुत सारे crises आएंगे. I can tell you that in all of that, when you feel nothing works, every moment, if you learn this little key, you would be in bliss. आपको बिल्कुल अनहद आनंद, मस्ती, खुशी, शांति मिलेगा if you understand this. It's a very simple thing. It is too simple, but as deceptive. बहुत easy भी है, पर बहुत, अगर उसे हम पकड़ नहीं पाते हैं तो वो मुश्किल भी हो जाता है. So, what does he say? उनके स्वरूप जो हर जगह है उसका वर्णन करते हुए अब 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं. आप लोग साथ में कहना चाहोगे? बुक्स हैं आपके पास? Would you like to repeat or follow with me? मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय. मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. What is this? Are any of you wearing any necklace? I can see all of you wearing the lanyard. आपके कॉलेज का आईडी कार्ड है ना? उस तरह से कोई अगर सूत्र है और उस पर
नेकलेस में बड़े बड़े मणि मोती सब पिरोए गए हों, तो भगवान क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, दैट प्योर कॉन्शियसनेस विच वी जस्ट स्पोक अबाउट, हमने अभी बात की ना, वो जो चेतना है अभी कि आप जब अपने आप को देखने लग जाते हो, दैट इज चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस। उसी चीज में इस विश्व की सभी चीजें उसी में पिरोई गई हैं, देर ऑल oth-proth connected to it, they're all connected in that little string, strung into that garland. ठीक है, एक जैसे हमने एक मोती को डोरी में हम रखते जाते हैं ना एक माला बनाने के लिए, तो उस तरह से माला का उन्होंने वर्णन किया है। एंड ही सेज देयर इज नथिंग, मेरे सिवाय और कुछ भी परम कारण नहीं है। ये पूरी जगत जो है, जैसे सूतर में सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम, ये एक कबीर जी की भी एक सुंदर भजन है, दैट विद दिस ब्रेथ, इस तरह से भगवान कहते हैं कि श्वास की माला नहीं, पर ये चेतना की जो माला है उसमें मैंने हर एक व्यक्ति, हर एक चीज, जो कुछ भी आप जगत में देखते हैं, इस सबको मैंने उसमें स्ट्रिंग करके रखा है, ओतप्रोत करके रखा है। देन there's a lot of trailer, कोई भी पिक्चर देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सैम्पलर, ट्रेलर्स देखते हैं ना, तो इसमें उसी तरह से 9 7वें अध्याय में है, लेकिन इसके बाद जो अध्याय आने वाले हैं उसमें विश्व रूप दर्शन भी आएगा। उस सब का भगवान अभी से कह रहे हैं कि मैं इसमें भी हूँ, इसमें हूँ, इस चीज में हूँ, उसका पूरा भगवान वर्णन दे रहे हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय, you can feel free to join with me. 7 o'clock is about, I think, just about happening. रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु. So he goes on to say that in all this, whether it is रस, essence, juice of water, उसमें भी मैं ही हूँ, शशि और सूर्य, अब जो कुछ भी हम देखते हैं, all this is the reflected light of the sun, isn't it? In the daytime, whatever you see is because of sunlight. तो शशि और सूर्य का जो light है, प्रभा, वो भी मैं हूँ. He goes on to describe himself. And उसके बाद 3 गुणों की भी बात करते हैं. कौन 3 गुण, किस 3 गुण की बात करते हैं? सत्व, रजस और तमस, वो हम ब्रेक के बाद देखेंगे. और फिर माया, योग माया, वो जो मैजिक एक हम सबके आंखों पर एक इल्यूजन आ जाता है, उसके बारे में भी भगवान बताते हैं. वी टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वी अगेन मीट आफ्टर द ब्रेक. Thank you, ma'am, for such a knowledgeable and insightful session. We will have a break of 10 minutes now. So we are starting with the session. I request everybody to settle down. A very good evening, everyone. A very good evening, everyone. We are about to start the session. I request the guest to come on the dais. Welcome back. सुनाई दीजिए.
So we're back. Sir, yeah. Okay, we're back. So what is it? हमने अभी तक जो पॉइंट्स देखे हैं फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है 7th चैप्टर, ये किस चीज पर है? हमने शुरू में we started, what is the title of this chapter? ज्ञान विज्ञान योग. Who will explain what is the meaning of Gyan? I'll give you a simple meaning that you've all heard of Swami Vivekananda. Anybody who's not heard his name? Anybody? Okay. So then we are on a good space to start. अब विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. He was a great spiritually evolved person. वो भी बहुत बड़ी विभूति थे. उन्होंने ये समझाया है जो हम अभी ज्ञान विज्ञान अज्ञान ज्ञान विज्ञान का अगर आप समझ उपमा एक कंपैरिजन करके दिया. सो मिल्क. तो जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि दूध नाम की एक चीज है उसे कहते हैं अज्ञान. Who doesn't know of लाइफ या जो भी इशू है. हम अभी इसमें एग्जाम्पल बताने के लिए दूध के बारे में एक एग्जाम्पल उन्होंने. लेकिन जो ज्ञानी है जो जानता है उसके बारे में थियोरेटिकल यानी सिद्धांतिक उसके पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क. व्हाइट. इज इट अ सॉलिड और अ लिक्विड? लिक्विड. व्हाट इज द डेंसिटी? इज इट न्यूट्रिशियस? Yes. Where does it come from? Cows, camels, goats, etc. So all these are theoretical information. ये सब जो है सिद्धांतिक माहिती है या सूचना है about milk. पर अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने एक ग्लास दूध पिया हो, अनुभव किया हो, उसे कहते हैं विज्ञान है. So do you see the difference? अज्ञान क्या है? You don't even know that you don't know. Ignorance is bliss. ठीक है? That is अज्ञान. ज्ञान, you know about something कि ये theory है. But what is विज्ञान? Experience. अनुभव से पूरा फर्क पड़ता है. When you have experienced it, जैसे अभी हमने बात की कि there is a constant chatter happening inside the mind. When you experience and watch that, then you know who is watching it. You may not catch that person watching. उसे आप एकदम पकड़ नहीं सकते पर आपको एहसास तो होता है ना. जैसे मैं कोई एक मेरे अंदर ये चीज दिख रही है, किसके बलबूते पर दिख रही है, कौन देख रहा है? That is चेतना. That is consciousness. है ना? So that is experience. जब आप कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो, मिठाई खाते हो, एक बंदा आके कहे अरे ये तो मीठा मतलब ऐसा है वैसा है, खीर है. But आपके लिए it makes no difference. But when you taste it, you say, yeah. So that is the difference. He says, Agyan, Gyan, and Vigyan. So we started with the title of the chapter, Gyan, Vigyan, Yog. उसके बाद इसमें उन्होंने क्या कहा? ये पूरा जो जगत है उसको उन्होंने डिसाइफर किया, डिकोड किया, यानी उसकी पृथक्करण की एक तरह से. और क्या कहा? 8 चीजें क्या क्या है? 5 elements, पंचभूत और ईगो, माइंड, इंटेलेक्ट. माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो और whichever way. तो ये 8 चीजें मन, बुद्धि, अहंकार और भूमि, जल, अग्नि, वायु, गगन और आकाश. और
ये सब क्या है? उन्होंने कहा एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज क्या था हम सबके लिए? इन्होंने कहा ये सब चीज क्या है? जड़ प्रकृति है, राइट? व्हाट डिड ही से? दिस इज ऑल अपरा प्रकृति। एंड जो चेतन कॉन्शियसनेस है, दैट ही सेज इज प्रकृति विच इज परा। ठीक है, ये एक डिफरेंस उन्होंने बताया। डिड वी अंडरस्टैंड दैट? देन उसके बाद क्या कहते हैं? आईफिल टावर की कहानी, कितने लोग हैं जीवन में, विश्व में? Millions and billions of people, right? But how many people want to go on this path of understanding what is life? The rest of them are immersed in life, in the misery of life. They may believe it's an enjoyment today, and the next day it's just amplified, you know, ekdam ecstasy, ekdam extremes of everything, you know, it's a complete pendulum kind of state. पर ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ लाइफ के बारे में सीखें? कितने लोग होते हैं? हजारों में से बहुत कम लोग जो प्रयत्न भी करते हैं, यतति, who try to understand what is this thing called life? Why is it that we go through all these feelings? How can I lead it in a very beautiful, integrated, harmonious way? It doesn't mean, again, mind you, it doesn't mean, इसका अर्थ ये नहीं है कि सब चीज छोड़ के मैं भाग जाऊं। ये भगवत गीता अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं कहते कि तुम लड़ाई युद्ध में यहाँ ठहर के लड़ाई करो, लड़ो, ऐसे नहीं कहते। He would have said, अच्छा चले जाओ एक आश्रम में जाके चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। So let's not confuse the two things. मेरी बात समझ में आ रही है? It's not about running away from life. How many of you think that कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को छोड़ के चले जाने से लाइफ is solved? How many of you feel or believe that is true? I'm glad nobody believes that, right? We know that running away from a problem is not, but having faced a challenge, आपके सामने एक चुनौती है, एक पड़तार है, उसको आप सॉल्व भी कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, और आपको जो भी आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है, वो निभाते हुए भी ऐसा हो सकता है you may do something that the near and dear ones feel very angered by you. आपके क्लास में कुछ हो रहा है, सभी कह रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा कुछ करना है जो आपके हिसाब से आपको लग रहा है नहीं ये गलत है, ये झूठ है, और आपके अंदर से आवाज आ रही कि नहीं मुझे करना है जो सही है, right? And when you follow that path, you also know that you're going to become very popular or unpopular, right? Louder. You're going to be unpopular. You're going to have consequences. उसके अंजाम होने वाले हैं, अच्छे अंजाम भी हो सकते हैं और ऐसे अंजाम जो हमें अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वो होने के बावजूद अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, right? So that is the point, to have that faith and go ahead and do what you feel is right. So first of all, he says there are thousands of people who want to find out. There are millions of people, but out of the 1,000 who try to find out, there are very few, बहुत ही कम हैं जो प्रयास करते हैं, और उसमें से बहुत ही कम है जो ये चाबी लाइफ की जो मास्टर की है, इसका पूरा उकेल, ताकि मैं सब कुछ कर सकूं। अगर मुझे किसी के सामने जाके लड़ाई भी करना हो अर्जुन की तरह, और वो चाहे मेरा गुरु ही क्यों ना हो। अर्जुन के सामने कौन कौन खड़े थे? पितामह थे, और कौन था? द्रोणाचार्य थे, सभी उसके बिल्कुल निजी लोग, और देयरफॉर वो एक दुविधा में था, उसके अंदर एक इमोशनल प्रॉब्लम हो गया। He's attached to these people. They are all his near and dear ones. But here, he has put on the role of a warrior. And his duty as a warrior wants him to go like this. But his heart tells him to go 180 degrees opposite. But he has to do what is the right thing to do. To do his duty. But having done his duty, agar wo
His mind is completely torn, tattered, if he's shattered and broken. Is that how we want to lead life? No. हमें अपने आप को वेर विखेर जिसे कहते हैं तोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना है, अपने आप को पूरा संभालते हुए एकदम हार्मोनियसली संवादिता के साथ, लेकिन हमें जो करना है जो सही है वो ही करें. You may have to take very difficult decisions, difficult actions, but to do it with faith and correctly, he says, I'm going to give you the key to that. फिर क्या कहते हैं? He pervades everything. क्या कहते हैं? मैं हर जगह हूँ, हर चीज के बीज. बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम. Understand that I am the seed of everything. And he also says, Buddhir buddhimatam asmi, तेजस तेजस्विनामहम. जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी जो बुद्धि है वो भी मैं ही हूं. जो तेजस है लोगों में, ग्लोरी, तेजस जो लोगों में दिखती है, जो बिल्कुल जो सफल हुए हैं उनके अंदर जो ग्लोरी है वो भी मैं ही हूं. एंड ही सेज आई एम जगतः अहम कृत्स्नस्य जगत. कृत्स्नम मतलब पूरा, द एंटायर जगत के प्रभाव और प्रलय. प्रभाव मतलब बर्थ, मतलब शुरू होना. प्रलय, व्हाट इज प्रलय? डिस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन. हर चीज में मैं ही हूं. देन व्हाट डिड ही से उसके बाद? ही इलस्ट्रेट्स मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव. अब हमने क्या कहा कि जैसे माला के अंदर मणि, बीड्स, मोती पिरोए जाते हैं, इस तरह से पूरे जगत में मेरी चेतना, मैं हर जगह मैं ही वो सूत्र हूं और मेरे अंदर सब कुछ उसमें पिरोया गया है. एंड देन उसके बाद वी स्पोक अबाउट द ट्रेलर. विश्व रूप दर्शन वो देने वाले हैं बाद में, है ना. अभी आगे वाले चैप्टर्स में थोड़ा वो सस्पेंस है आपके लिए, लेकिन ही इज बिगिनिंग टू गिव लिटिल वो क्रैक्स से लाइट आता है ना. कहीं आप कहीं जा रहे हो पूरा बंद है और कहीं कहीं बीच बीच से प्रकाश आने लग जाते. यू नाउ गोइंग टू ब्रेक दैट बैरियर एंड गेट फुल लाइट. पर अभी थोड़े थोड़े आसार, थोड़े थोड़े hints of light aa rahe hain. So what is he describing? He says, what am I? रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु. कहते हैं मैं जल में एसेंस, रस. फिर क्या कहते हैं? शशि और सूर्य. सूर्य और चंद्रमा में मैं क्या हूं? प्रकाश हूं. फिर कहते हैं सर्ववेदेषु प्रणव. प्रणव क्या है? यहाँ है कोई जिसका नाम प्रणव हो? Is there anybody whose name is Pranav in this class? Pranav means ओमकार. ओम कहते हैं, that is Pranav. He says in all the Veds, I am the Pranav. And he says, I am everything. Punyo gandha prithivyam. Have you heard or the sound of the first rain? जब बारिश होती है तब कैसा साउंड आता है? चलो हम लोग आजमाते हैं. हाथ ऐसे करो and just use one finger. Isn't this the sound of first rain? Yes. And what is the smell of first rain? मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू अभी आप सूंघ रहे हैं. कल्पना करो तो कर सकते हैं. तो भगवान क्या कहते हैं? पुण्यो गंधः पृथिव्याम, यानी कि धरती की जो फर्स्ट रेन, दैट बिल्कुल जो पृथ्वी का जो गंध है, स्मेल है, वो मैं हूं. एंड देन तेजस चास्मी विभावसौ, मतलब अग्नि में जो दैट हीट अग्नि है वो तेज भी मैं ही हूं. सर्वभूतेषु जीवनम च तपस्विषु तपः अस्मि. सभी प्राणी जो है पूरे जगत में, सभी प्राणी, उन सब का जीवन कौन है? मैं. कॉन्शियसनेस. भगवान कह रहे हैं
And he's also saying कि जो तपस्वी हैं, जो लोग तप करते हैं, तप means striving for perfection. How many of you want to be perfect in whatever you do? You have to aim for perfection. Why is the hand here? We need perfection in that as well. How many of you want to be imperfect? Okay. Now, how many of you want to be perfect? It can be either this or that. Okay. So perfection यानी उसके लिए तप करनी पड़ती है. Practice and practice and practice. आप करते रहोगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? You become perfect. Then balam balavatam chaham kama raga vivarjitam. ये बहुत ही beautiful चीज उन्होंने कही है. What is meant by bala? बल क्या होता है? Who is going to tell me? Strength. बलवताम चाहम. लेकिन इसमें एक क्वालिफायर उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी है. कैसी? बल. काम राग विवर्जितम. अब महात्मा गांधी का चितार आपके आंखों के सामने है. उनके पास 8 पैक एब्स थे. Was he muscular? Did he have a lot of bal of money? But was he balavatam? Absolutely, spot on. Mother Teresa, was she full of muscles or tennis? No, she was a frail lady. Did she have pots and pots and millions of dollars stashed away in Swiss bank? No. But was she strong? Absolutely. Why is this yes a very weak? She was strong. How many of you want to be strong like that? I want all the hands to go up. Yes, and you can. It's not about just physical strength. You may be Mr. India. You may be a bodybuilder. But the minute थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है, there are people who start crying. They get shaken by small challenges in life. Is that balavatam? No. So what does he say? What is the key to it? Kama raga vivarjitam. What is meant by kama? Kama? What is the meaning of the word kama? Desire. Any desire. Isn't it? You have a desire for anything. Somebody desires food. खाना है तो सब कुछ मैं भूल जाऊंगा. Is that accepted? If you want to be striving for bala and perfection, that's a distraction. But that does not mean कि आप खाना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं. You have every right to enjoy your food. You eat what you have to eat. You enjoy the things of life, but don't get totally carried away by them. यानी कि बिल्कुल उस चीज में, उस बहकाव में मत आइए. पर आप बिल्कुल जो अच्छी चीज है, आप बिल्कुल जैसे अभी कहा है, पृथ्वी गंधम, अच्छी स्मेल है, अच्छी टेस्ट है, अच्छी टेक्सचर है, सब कुछ. यू एंजॉय ऑल दैट, बट डोंट गेट कैरीड अवे कि भाई ये बिल्कुल पागल हो गए, इसके बगैर मैं जी ही नहीं सकता, ये होगा तो ही मैं रहूंगा. दैट इज नॉट डिजायरेबल. रागा. व्हाट इज रागा अगेन? अटैचमेंट. Attachment doesn't mean you should become totally एक cruel, heartless monster, है ना? भगवान ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल जिसका हृदय ही नहीं है, बिल्कुल आप कठोर बन जाइए. कोई सामने किसी को कोई नीचे गिर के एक्सीडेंट में मर रहा है तो उसको देख के कोई असर न पड़े, ऐसा नहीं कह रहे हैं. संवेदनशीलता बिल्कुल होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि अटैच हो और कुछ भी हो तो फिर आप उस चीज को देख के आप तबे भांगी पड़ो, रड़वा માંડો, તૂટી જાઓ, એવી રીતે નહીં. સમજ પડે છે? રાઈટ? there's a very beautiful saint. ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના માટીના એક બહુ જ એક કવિયત્રી એક કહેવાય, ગંગા સતી. તમે એમનું નામ સાંભળ્યું છે કોઈ? An old poetess. She says, मेरू तो डगे. मेरू क्या है? कौन? What is she referring to? What is मेरू?
इट्स अ माउंटेन. मेरू तो डगे, माउंटेन भी शायद हिले, पण जेना मनडा मनडा डगे नहीं, भांगी पड़े आखू ब्रह्मांड रे. तो वो कहती है कि चाहे पूरी ब्रह्मांड ही क्यों ना टूट के पड़ी हो, पर आपका मन टूटेगा सही नहीं. दैट इज अ पर्सन who is a person who qualifies to be a balavanta, right? And I'm sure हम सब कोशिश करेंगे तो हो सकता है. तो इसमें भगवान क्या कहते हैं? बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ. धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि मतलब अविरुद्ध कामोस्मि, जो काम से प्रतिकूल और शास्त्र के अनुकूल जो है उस धर्म. धर्म का मतलब क्या है? यस, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं धर्म इज रिलीजन. दैट्स अ वेरी रॉन्ग ट्रांसलेशन. धर्म क्या होती है? आपका कर्तव्य. एज अ स्टूडेंट, व्हाट इज योर धर्म? नॉट ओनली टू स्टडी, टू इंक्वायर, टू थिंक why something is and why it is not, to critically think, creatively think, to participate, to ask questions, understand, right? So इस तरह से हर स्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन के हर मुकाम पे एक अपनी कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटीज वगैरह, उसको धर्म कहते हैं. और धर्म उसके बाद कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्त एवेति तान विधि न त्वहम तेषु ते मयि. देन अब भगवान क्या कहते हैं? फिर सत्व, रजस और तमोगुण के बारे में कहते हैं. इसका एक बहुत ही रफ ट्रांसलेशन, सत्व को हम कह सकते हैं थिंग्स विच आर एज पर लॉ, है ना? व्हाट इज एज पर लॉ? रजस pertain to activity, energy. Sometimes हम hyperactive बन जाते हैं ना. Rajas is about that. And tamas को एक रफ ट्रांसलेशन कहेंगे इनर्शिया, निष्क्रिय. कुछ भी हो बिल्कुल ठंडा, कुछ नहीं करना. तो ये तीनों गुण हम सब में है. कौन से तीन गुण? सत्व, रजस, tamas. What is sattva? Meaning whatever is the right thing, whatever is your right thing as per law. So it's a rough translation. What is rajas? Where there is excessive activity. And if you really want to compete and say, I've got this done, I've got that done, which is okay. But उसमें हम अगर खो जाते हैं तो is that desirable? You're full of, you're busy, जैसे कहते हैं ना, you're running like a headless chicken, ऐसे कहते हैं ना. मतलब माथा वगरना एक વ્યક્તિની જેમ આપણે દોડતા રહીએ, that is also not a great idea. તમસ, કશું ન કરીએ, ધીમી ગતિ, એકદમ પડ્યા રહીએ, is that okay? No. So you need a balance of all the three, or probably go beyond all the three. तो ये तीनों गुण भगवान कहते हैं कि मेरे से ही ये तीनों गुण भी निकले हैं. He spoke of those 5 plus 3 which consciousness. अब इसमें he goes on to describe ये 3 गुण भी मेरे से ही निकलते हैं, लेकिन ये गुण मेरे अंदर नहीं है और मैं इनके अंदर नहीं हूं. That's a very interesting. It's something that I have created. I am not in these 3 and they are not in me. Right? That's the point he makes. उसके बाद कहते हैं त्रिभिर गुणमयैर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. तो इसमें क्या कहते हैं? ये पूरा जो जगत है, मोहितम, इन तीनों गुण से पूरा मोह में खोया हुआ है. और इन तीनों गुण से पर, इफ यू गो बियॉन्ड दीज 3 गुण्स ऑफ एकदम मीनिंगलेस एक्टिविटी. ऐसे लोग होंगे तो सवेरे से दौड़ते 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 मुझे ये करना है, वो करना है. समटाइम्स वी आल्सो बिहेव दैट वे. डोंट, वी आर रनिंग ऑल द टाइम. Do you see that sometimes
happening in you? कभी होता है? And then sometimes you feel that you're doing things absolutely rightly. You're doing things at the right time और बहुत ही सुंदर तरह से सब अपनी अपनी जगह पर सब काम हो भी जाता है. ये समझ रहे हैं आप? Have you felt it? Things just happen nicely. वो कहते हैं ना, जैसे गीत सेठी is a very good snooker player. जैसे आप में से कितने लोग टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं? कितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस? तो उसमें जब खेलते हैं अक्सर एक स्वीट स्पॉट कहते हैं, यानी कि वो अगर रैकेट को राइट स्पॉट पर लगे तो आपको बहुत फोर्स देने की जरूरत नहीं होती है. यू जस्ट टच इट बट इट गोज ब्यूटीफुली इन द राइट डायरेक्शन. ये देखा है आपने, महसूस किया है? वैसे ही लाइफ में अक्सर एक फेदर टच, आप किसी से कुछ कहते हैं और वाह, एवरीथिंग स्टार्ट्स मूविंग. ऐसे लगा है कभी? आपको कुछ प्रोजेक्ट करना है, काम करना है, और कभी लगता है कि सब कुछ करके माथे को भी आपने दरवाजे के साथ बिल्कुल ऐसे यू ब्रोकन योर हेड लिटरली अगेंस्ट द वॉल, पर कुछ हिलता नहीं है. मीनिंगलेस एक्टिविटी, राइट? वो किसके जैसे है? रजस है, तमस है, सत्व है. वो क्या है? व्हेन यू कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, रजस. But there are times sattva, you just opened, you were banging your head against this wall, that wall everywhere, but finally you went and you just touched the door and the door opened. Why? Because that was the door. All this was not the door. You were banging all this, it is obvious, isn't it? So this is kind of rajasic, but sattvic means you did the right thing. You realized, you thought for a moment, आपने एक मिनट के लिए सोचा, अरे भैया दरवाजा तो वहां है. Why on earth am I banging this and breaking my hand and head? Let me go there and open it. ठीक है? That sweet spot, doing things the right way. And tamas, why is the door not opening? And criticizing everybody, blaming others and being in deep sleep. So, लेकिन भगवान कहते हैं कि I am beyond all of this. Then he says, there is this magical person, मेरी ही माया नाम की एक, there is a magician called Maya who covers everybody. सबके आंखों में क्या डाल देती है? सबके आंखों में क्या? Who wants to say? Yeah? Dust. Fairy dust, magic dust. या कोई ऐसा dust डाल देती है, which is also another word somebody here said correctly. Illusion. She just puts it and then you're in an illusion. Right? वो भी माया भी. Who has created Maya? किसकी है माया? भगवान की. It's again like the painter. Remember we spoke about the painter? So when the painter does it, first you get disillusioned because you have that illusion there and you see that, oh, this looks very frightening. ये बिल्कुल डरावना picture है या फिर इतना अद्भुत है. लेकिन बाद में you realize, अरे this is nothing, it's just a play of colors, है ना? Colors और textures से उसने कुछ किया है. It looks beautiful. अच्छा, उसकी कारीगरी अच्छी है. He's an amazing painter, awesome painter, wonderful artist. लेकिन it's not real, right? Similarly, when all this happens in life, somebody gave you a gali, what does it do to you? But if you're not evolved, what happens? Somebody shouts at you, somebody criticizes you. What is the immediate reaction normally? You want to give him, if he gave one gali, how many are you preparing? Maybe 10 or 100. And then after you give, how many is he going to give back or she going to give back? Geometric progression, snowballing effect, it will never end. But if you have that little presence of mind to realize, okay, this is all a play of what? अभी इसमें तो अब आपको चाबी मिल गई है. What are the elements? Paint, brush, texture, canvas, light. यही सब जो चीजें हैं. पेंटिंग कितने लोग करते हैं? Again, raise your hand. So what are the things that make a painting really beautiful?
colors, palette, shades, light also. Agar if it's dark, you can't see the painting. Light. Louder. Canvas, stand, easel, stand. ठीक है. So with this, similarly, अब life नाम की जो painting है, अभी आपको जो भगवान ने श्री कृष्ण has given you the key to life, उसमें क्या क्या है ये सब? Paints, palette, texture, canvas, light. What are they? 5 elements. भूमि, जल, अग्नि, वायु, गगन. 3 मन, बुद्धि, अहंकार. उसके बाद 3 गुण. Which were the 3 गुण? सत्व, रजस, तमस. और उसके बाद that sprinkling, Maya, Yog Maya. Now this is all. Once you get to see it, okay, you just hold the artist. Artist का हाथ आपने पकड़ लिया, you know, okay, this guy has painted it. It's a beautiful painting, I agree. आप ये नहीं कह रहे हो कि painting is lousy, but you know it is a painting, right? Similarly, when anything happens to you, when somebody sings songs in your praise and says beautiful things about you, would you get totally carried away? Flattery, total buttering. Also, you're not totally off balance. You know, okay, all this is a play of those 8 things plus the 3 guna plus Maya. This is the Jnana Vigyan. You've got all the building blocks. बचपन में कितने लोग लेगो से खेलते थे? आप सब खेलते थे? कुछ भी building blocks है. So these are the building blocks of life, which Bhagwan Shri Krishna has given you, right? What are the building blocks? 8 plus 3 plus 1. ठीक है? And but what is the true thing which pervades everything, which is the Lord? What is that? Consciousness. क्या है? Consciousness. And that consciousness, can all of you sit silent for a minute? Sit straight. Close your eyes. Absolute straight. Badha tatar baisi jao. Aankhon band. No word. Total silence, please. Can you feel your breath? Shwas par dhyan. Just observe your breath. Don't make an effort of breathing. Just observe. Are you conscious of your breath? Okay, slowly open your eyes. That consciousness is the basic core of everything. That's what Sri Krishna is saying. That awareness. એ જે ચેતના છે, જાગૃતિ છે. And then એના પછી હવે ભગવાન એક બીજી બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કહે છે. He's going on to say something very interesting. He says, अब जो माया की बात उन्होंने की है उसके बाद चतुर्विधा. Let's all read the 16th shloka together. The last row too. Chaturvidha bhajante mam jana sukriti norjuna arto jignyasurarthati jnani cha bharatarshava. So he's talking of 4 kinds. 4 प्रकार के लोग जो जानना चाहते हैं, है ना? और जो भगवान को भजनते माम, जो भगवान कृष्ण भगवान या जो भी नाम हो भगवान का, उनकी प्रार्थना करते हैं, भजते हैं, उनके लिए यातना करते हैं. कौन है ये 4? If any of you has a major sudden pain, have any of you ever experienced pain, shooting pain? How many have any kind of pain? What is the first thought that comes to your mind? Hey Bhagwan, if it's really some kind of suffering, you remember the Lord.
those are arto, arti means people who are suffering, है ना? Number 1. Second is jigyasu. If you're curious, why is this working? ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? I'm just curious. मुझे जिज्ञासा है. That is the second category. Third, how many of you have some mission, some goal, some dream कि मुझे ये करना है? I think we should all have it. है ना? Now I'm going to ask the reverse question. How many of us do not have any dream? Okay. So when we have a dream, when we are very passionate about a dream, and I want to achieve that, I want to be the best singer, I want to be the best film star, I want to be the best writer, I want to be the best chartered accountant. और क्या हो सकता है? The best psychologist, whatever it be. When you want to achieve something, artharthi, you want something, or you want to be the richest person, the most famous. How many people want to be very famous, rich, etc., right? These are not bad words. You can be rich, you can be famous, but you also want to be a good human being. How many of us want to be good human beings? I think this is the moment of taking a picture. Let's take a photograph. No? Wonderful. Yeah. How many of us want to be good human beings and who are also successful and have a lot of money to give back to society and be famous and be loved by everybody and love everyone? Yes? Tathastu. Yes. Huh? Okay. So, how many types did we say so far? Sauthi pehla, pain. Hey Bhagwan. That is called Arti. Number 2, Jigyasu, curious. Number 3, Artha. For some, gains, material gains. And what is the 4th? Jnani. So, Jnani is a wise person. જે બિલકુલ જ્ઞાની છે અને આપણે બધા પણ કેમ કે હમણાં જે the question that you all answered, you wanted name, fame, money, wealth, but at the core of it, what did we all want? To be basically a good human being, which means, and the fact that you're all coming for this course also goes to show that you are wise people at this age in life, at this stage in life. You want to understand something which is invaluable. Believe me, always keep this book with you through your ups and downs of life, challenges of life, difficulties, moments of jubilation. This book will always keep you in good stead. તમને બધાને આ book અને આની જે તત્વ છે, this will always keep you bilkul tamne hamesha, it will keep you well. But tesham jnani nitya yukta ek bhaktir visishyate priyo hi jnani notyartham aham sacha mama priyah. શું કહે છે? He says, out of these 4, who are the 4 quickly? Buzz around. Arti, somebody who is suffering, जो किसी पेन में है. दूसरा, जिज्ञासु, जिसे कुछ चाहिए, मतलबी, ठीक है. एंड चौथा, ज्ञानी. इन चारों में से भगवान को सबसे प्रिय कौन है? क्यों? क्यों? इसमें आंसर दिया है उन्होंने, नित्य युक्त, क्योंकि उसके साथ क्या चीज है? सातत्य. हमेशा. वो मतलब ऐसा नहीं कि आज लगा कि भगवान से मैं जाके प्रार्थना करूं, भगवान आप बहुत अच्छे, और कल forget it. ऐसा नहीं है. He is consistent, है ना? तो नित्य युक्त. और उसके बाद क्या कहते हैं? और एक भक्तिर विशिष्यते, अन्योन्य भक्ति भी है. अभी हमने बात की शुरुआत में, अगर एक आप सबको इस कॉलेज में जब आपकी डिग्री कोर्स पूरी हो जाएगी, लास्ट रो में से मैं किसी को आगे बुलाना चाहती हूँ
to help me. Can I invite the last gentleman to come here for a minute? Let's have a nice conversation here. Which degree are you? The last gentleman, can you stand up? The one with glasses. Yes. And a beard. Yes, please. What's your name? Sorry? धवल. धवल किस प्रोग्राम में है आप? बीकॉम. तो बीकॉम के एंड में आपको क्या मिलेगा? डिग्री. और कॉन्वोकेशन में क्या मिलेगा आपको? You will get a certificate. How big is that certificate? About this big? How big is it? This big? What size of paper roughly? A4 size. A4 size. Now, if I took that paper and measured the weight or whatever and got another paper of the same kind, etc., which of them is of any value to you? A blank sheet of paper and the one with your degree on it, which is of value? Degree 1. Obvious, isn't it? Which one is of value? Degree 1. Why? दोनों पेपर हैं भाई, दोनों A4 साइज के हैं, दोनों एक ही मटेरियल के हैं. What is the difference? Because I have done something. What is that on it? But there's a stamp. It has University of Mumbai. It has your name. It has a stamp. हाँ कि ना? Yes, ma'am. Yes. So that stamp, आप अगर कुछ काम कर रहे हो धवल, कोई भी, I want all of you to listen to this. ये बहुत ही, it's $1 million gift for you to remember. आप कुछ भी काम कर रहे हो, if you just do that work, it's like what Dhaval just said. It's like a plain sheet of paper. But उसी काम को, उसी चीज को जब आप भाव के साथ, भक्ति के साथ, with involvement करते हैं, what is stamped on it? Bhakti. What is the value of that sheet of paper which has University of Mumbai and the stamping? So, is this understood, Dhaval? So how would you do any work? One is just doing it mechanically, kuch bhi, if you have to write a project just mechanically, but the second would be doing it with involvement. इस साल आपका theme क्या है? Involve and evolve. Involve and Evolve. evolve. So if you want this plain blank sheet of paper without involvement, there's going to be no evolution, right? But the minute you do anything with that involvement का दूसरा नाम क्या है? Whenever you're involved in something, what does it mean? आप अपने दिल से, जान से, you are thinking about it, you're feeling about it, isn't it? Another name could be bhav, bhakti, and that's what Bhagwan is telling here. All clear, Dhaval? Yes, ma'am. Will you follow this? Yes, ma'am. Excellent. Let's give him a big hand. Thank you. Chaliye. Now, after that, so he says, why do I like the Jnani? He spoke of 4 kinds of people. But of them, why does he like the Jnani? Nitya Yukta and Eka Bhaktir Visishyate. And then, now we go on and he says, Bahunam Janmana. I think it's about 8 o'clock. We're going to wind up. But I think the gist of it has come. I'm just going to tell a few more things and wind up. Bahunam Janmanam Ante Jnanavanma Prapadyate Vasudevah Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Apne Eiffel Tower ni baat kari? You remember the story? You remember that डेढ़ का भाई के डेढ़ का बहन who went all the way up, right? So he says after many lives, बहुत सारे जन्म के बाद ऐसे एकाध महात्मा जो होते हैं, वो उनको क्या समझ में आता है कि ये पूरी जगत जो है, हर चीज में क्या है, कौन है? They see the divine in everything. It doesn't mean that आप अपना functioning न करें. जैसे अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि आप द्रोणाचार्य के
पांव पर जाके पड़ जाओ ऐसे अभी कह रहे हैं, जाके माफी मांगो ऐसे कह रहे हैं, नहीं, लड़ने की ही बात कर रहे हैं। पर व्हाट इज ही सेइंग, हर एक व्यक्ति में, हर चीज के अंदर आप क्या देख रहे हो? हु इज इन द lotus of the heart of every being? Who is there? What is that? The divine spark. So you're getting a divya chakshu, a special way of realizing, of understanding and experiencing. सिर्फ ज्ञान नहीं है, पर ये विज्ञान है। सिर्फ दूध को हम देख नहीं रहे हैं, पर हम actually experience कर रहे हैं। So you're experiencing that हर एक के अंदर ये अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं, हम सब क्या है? एक है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, but genuinely when you realize that we're all one, because who is in each one of us? The same divine. तो वो कहते हैं, और उसके बाद now he also goes on to explain another thing कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो मुझे न देखते हुए बाकी उनको श्रद्धा और किसी चीज में है। Have you heard the story of somebody called Midas? Midas एक ग्रीक राजा थे। Have you heard of Midas touch? ये ग्रीक जो राजा था, परफेक्शन, उसे बहुत इच्छा थी कि मैं हर चीज में सोना, गोल्ड, हर चीज मेरे किंगडम में, मेरे आजू बाजू हर चीज कैसा हो? सुनहरा हो, सुनहरा, सोने की तरह न हो, सोना सोने का ही हो। तो क्या कहते हैं वो भगवान से, मतलब एकदम प्रार्थना करते हैं, और भगवान वैसे आशुतोष हैं, जल्दी हाँ भी बोलते थे। वॉट एवर यू वॉन्ट, आप अगर सच्चे मन से, सच्चे इरादे से मांगेंगे, तो दैट डिवाइन स्पार्क इन यू is ever compassionate, ever willing to grant anything you ask. So always have that faith. Believe that whatever you ask, if you ask honestly with purity, you will get it. तो मिडास ने क्या मांगा कि मैं जिस चीज को भी टच करूं वो क्या हो जाए? सोना। भगवान ने क्या कहा? तथास्तु। So he was very happy. Let me try. He touched the book. Book क्या हो गया पूरा? And then this went on. Then he went into the garden. He touched the rose. गुलाब किस कलर का था? लाल रंग का, एकदम जीता जागता गुलाब था। उसको टच किया, अब गुलाब कैसे हो गया? एकदम लस्ट्रस, एकदम जो ज्वलित सुवर्ण गुलाब बन गया। उसके बाद आते हैं महाराज अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर, ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और फिर ब्रेकफास्ट में क्या रखा हुआ होता है? ग्रीक सैलड, सीजर सैलड और ग्रीक सैलड। उसे क्या करने जाते हैं? क्या हो जाता है? और उतने में उनकी छोटी बिटिया दौड़ती आती है, एकदम प्यारी बिटिया। और आफ्टर ऑल ही इज द फादर, his heart wants to lift the baby, he lifts her. What happens to that child? So similarly भस्मासुर की भी आपने कहानी सुनी होगी। So भगवान इसमें कहना चाहते हैं कि आपको यो या में जिस जिस चीज में आपको श्रद्धा हो आप मांग सकते हैं, मैं दे भी दूंगा। लेकिन what is ultimately the best thing for you to have shraddha in? All these desires of this kind, or ultimate desire क्या है? What is ultimate frisbee? What is ultimate desire? What is it? To always be connected with the divine by being aware. So don't ask necessarily to do all of this in a manner that is full of raga and dvesha. You ask for it, you ask for gold, you ask for fame, name, but at the core of it, you want to be a sensitive, good human being who's conscious, who's able to make a difference, be a leader who can change the world.
who can earn a lot but also give a lot back to humanity. समझ में आ गया? So if that is it, it will happen. But he goes on to say, Naham prakasha sarvasya yoga maya samavritah मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम चमप्ययम. तो कहते हैं कि because I don't shine everywhere. जैसे अभी everybody in this room, everybody in this room has what is the essence of everything in this room? What have we learned today? What is the essence of everything? What is inside everything? Divinity. Vasudeva sarvam iti स महात्मा सुदुर्लभा. वो जो फ्रॉग था, ऐसे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं पर बहुत जन्मों के बाद एक आध दो लोग समझते हैं कि हर चीज में कौन है? ईश्वर, डिविनिटी, राइट? बट इज दैट शाइनिंग एवरीवेयर? इसको तो मैं देखती हूँ, फरस है ये तो. दिस इज द फ्लोर ऑफ द स्टेज, दिस इज द ट्राइपॉड ऑफ द कैमरा. कैन आई सी divinity shining on it? No. So he says, because naham prakasha sarvasya, I am not visible as divinity to everyone and everything. Why? Mane kone ढंकायलु है? Yoga maya samavritah. So there is this illusion, this magic, which has put a veil on everything. So I am not visible. But and he also says, मैं past, present, future, vedaham samatitani vartamanani arjuna, bhavishyani cha bhutani mam tu vedana kaschana. I know the past, present, and future. He's omniscient. He knows everything. Kaun? Who? Sleep check question. Huh? Sri Krishna, the Lord. And then he says, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप. सो संसार में जो सुख दुख जो आते हैं बिकॉज ऑफ इच्छा और द्वेष, इस वजह से सभी जीव जंतु, सभी लोग जो हैं, देर ऑल इनटू दिस अज्ञानता. ठीक है, they're all in this deep ignorance. उसकी चाबी आज हमें मिल गई है. Have all of us got the चाबी? Theoretically, but now you have to experience it. And then he says, Jara marana mokshaya mamashritya yatanti ye. 29. Te brahma tad vidu kritsnam adhyatmam karma chakhilam. He says, those who surrender to me realize, जिन लोगों को ये समझ आती है और मेरे शरण हो जाते हैं, वो जरा और मरण यानी कि ओल्ड एज और डेथ से भी छूट जाते हैं. जैसे जैकेट है, you can see I'm wearing a nice jacket here. Many of you are wearing coats, isn't it? Similarly, this body that we have, it's just a brown colored jacket. When you go home, आप जब घर जाते हो, what do? You remove your jacket. Similarly, there's nothing like death. There's nothing like old age. Basically, the soul, that divine spark within us, will never die. हमेशा वो रहेगा, लेकिन बदलता क्या है? This body, which is like a cloth, like a jacket, like a costume that we wear. And chelle, he says something very beautiful. Can all of you read the 30th together? You can all open this, we'll read it together. Sadhi bhutadhi daivam mam sadhi yajnam cha ye viduhu prayana kale picha mam te vidur yukta chetasaha. He talks of 3 words. After all, अर्जुन कैसा स्टूडेंट है, किस प्रकार का विद्यार्थी है? बिल्कुल बुद्धू है या इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाइज?
isn't it? Very smart, very sharp, very bright, very skilled. मतलब जो जो adjectives हैं आप उसके लिए विशेषण कह सकते हैं. After all, he was one of the greatest warriors and greatest strategists. है ना? वो तो strategy बनाते थे, सब करते थे. But he's now at a weak moment क्योंकि उसको एक दुविधा हुई है और भगवान उसको थोड़ा प्रोवोक करना चाहते हैं, उसको छंछेड़ के उसे कुछ समझाना चाहते हैं. तो उसको थोड़े इंटेलिजेंट वर्ड्स भी देते हैं. कहते हैं कि ये उन्होंने जो 4 प्रकार के लोग जो भगवान को प्रार्थना करते हैं उनमें से किसका उल्लेख करते हुए कहा कि ये बहुत मेरा प्रिय है. किसको कहा? ज्ञानी, यानी द वाइज वन, which is each one of us here, right? आप सब ज्ञानी हैं? Yes. So when he says that, why does he say, what is the qualifier of a ज्ञानी? आज मन किया, कल मन किया. Is that the लक्षण of a ज्ञानी? No. Consistency, यानी कि हमेशा नित्य युक्त, हमेशा भगवान में श्रद्धा रहे, consistent रहे, है ना? And he also says bhakti. हमने वो बात की ना, धवल who helped us understand that. धवल, that piece of paper, degree, right? वो किससे होगा? Stamp of भावा. अगर किसी ने आपको मांगा पानी चाहिए, उठा के, shall I throw this bottle? ले. Is that a good way of giving water? Or if you give it with bhava, which do you think makes the person take it in a better way? Obviously, right? So similarly, whatever you do, if we do it with that sense of involvement, then you evolve. So आपका जो theme है, what is the theme? Involve and evolve. So involvement comes with bhakti, with bhava, bhakti, and when you apply that and do your work with focus, ekagrata, which happens. तो છેલ્લે ભગવાન શું કહે છે? आदिभूत. What did we just realize today? आज हमने क्या सीखा कि सभी जो चीजें हैं, प्राणी, जीव, जंतु, वस्तु, हर चीज के कोर में, हर एक चीज के अंदर निहित क्या है? डिविनिटी, आदिभूत. तो भगवान कह रहे कि हर चीज के अंदर कौन बैठा है? मैं, डिवाइन स्पार्क. आदि यज्ञ. यज्ञ क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग. अभी आज आप सबने किया. We asked you to be silent for a minute and observe your thoughts. That process of realizing कि वो मेरे अंदर कौन है जो हर चीज को देख रहा है. जब आप कुछ गलत करने का सोचते भी हो, is there a voice quietly, very very soft voice आपके अंदर कहती है no? ऐसे सुनाई देता है, बहुत ही हल्की आवाज. That is Adi Yajna, when you're aware of that divine spark within. And the third is Adi Daiva. Adi Daiva means the divinity which is, आप उसको उनको नाम दे सकते हैं श्री कृष्ण या जो भी नाम दे. He's talking of 3 levels: Adi Daiva, Adi Bhuta, and Adi Yajna. What is the difference? What is Adi Daiva? Adi Daiva means the Lord. उसको जो भी आप नाम दें, consciousness, supreme intelligence, और क्या कह सकते हैं? Divinity, the divine intelligence, supreme lord of love, जो भी नाम कहना है. Second is Adi Bhuta, which is present in the divine spark. And what is Adi Yajna? The action of realizing that spark within. So इस note पर this chapter gets over, and I express my heartfelt gratitude to our distinguished speaker, Dr. Jayanti Ravi ma'am. I thank you for agreeing to be here and spending your valuable time to enlighten us.
I'm sure the participants will go a long way in building their and enhancing their career. Ma'am, your presence and your multilingual interactions and your melodious words. There is a lot of things that we have learned today. Thank you very much. And I also thank our participants for patient listening and being here. Thank you. See you all tomorrow.